क्या मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर। गुड। तो हमने लास्ट टाइम क्या किया था? ओके, हमने किया था वो व्हाट्स कॉल्ड बेसल्स इनइक्वालिटी, लेकिन हमने उसका फाइनाइट केस किया था बेसिकली. इट वाज अबाउट एन ऑर्थोनॉर्मल सबसेट ऑफ हिल्बर्ट स्पेस. सो कैमरा ऑन करो पहले सभी, थोड़ा अटेंडेंस हो जाए. ओके 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 ओके, हम कंटिन्यू करते हैं. कैमरा ऑन करो ना सभी, तो टाइम क्यों लगता है? All of you, 19:6:35. Okay. हाँ, एक्चुअली तुम मुझे वो ईमेल करना, वो जो लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स थी ना, तुमने व्हाट्सएप किया ना, यहाँ से वो कनेक्ट नहीं हो रहा है मेरा फोन से. कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं. ईमेल मेरा पता है ना? नो सर, आप मैं फिर आपको कॉल करता हूँ या फिर आप मुझे टेक्स्ट करिएगा, मैं फिर उसके करता हूँ. ओके, अच्छा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ईमेल. चलो ठीक है सर, मैं लिख देता हूँ. gm35sophie@gmail.com. तो ये ठीक मुझे है तुम सर. इस पे भेज देना, ठीक है? ओके. सो हम ऑर्थोनॉर्मल सेट्स की बात कर रहे थे. हमने कहा था a set is orthonormal. We've got a Hilbert space or an inner product space. H is a Hilbert space, and we say that a set EI is orthonormal in, फिर हमने examples देखी थी कुछ. H, if EI, EJ, inner product is equal to 0, if I is not equal to J, this is equal to 1 if I is equal to J. They are mutually orthogonal unit vectors inside H. अब हम इसी के रिलेटेड करेंगे what's called Bessel's inequality. अब Bessel's inequality में हम करेंगे Bessel's inequality if EI is an orthonormal set. अब ये finite ना, infinite, uncountable, whatever जो भी है, countable is an orthonormal set in a Hilbert space H. In a Hilbert space H, then summation modulus of x EI inner product squared is less than equal to norm x squared. Okay, तो पहले जो हमने किया था यही चीज, but for a finite set, for a finite orthonormal set we have already done it actually rather easily, but this is true for any x belonging to H. तो हम कह रहे हैं कि कितना भी बड़ा हो, अनकाउंटेबल हो, काउंटेबल हो, फाइनाइट हो, दिस इज ऑलवेज ट्रू. ठीक है? तो इसको प्रूव करने के लिए हम एक लेमा करेंगे. लेमा जो है, हम कहेंगे इफ कोई भी ऑर्थोनॉर्मल सेट हो, EI is an orthonormal set in a Hilbert space H, and if X is an arbitrary element of H, कोई भी element of Hilbert space H का, then the set
ये जो सेट है, set of all EIs such that, let me call it S, all EIs such that XEI is non-zero, XEI जो inner product है वो non-zero है, is at most is either empty or countable, is either या तो ये empty होगा या countable होगा, or countable, यानी it cannot be uncountable where the projection of x along these orthonormal vectors is non-zero. I mean, non-zero can at most be countable. Non-zero projections can be at most countable. So that's the idea. No matter what the orthonormal set. अब इसका proof जो है, proof बड़ा simple है. Proof of the lemma. Proof of the lemma वो ये होगा. Now, for each n belonging to the set of natural numbers, consider this set. Consider the set, अगर हम set लेंगे Sn, नहीं पहले हम कहेंगे suppose S is not, हमें क्या दिखाना है, या तो ये empty है या at most countable है. हम कहेंगे suppose S is non-empty, ठीक है. यानी अगर ये non-empty है, then we have to show that it must be countable and consider the set Sn to be EI of all EI such that modulus of XEI square, their product square, is bigger than norm of x square divided by n. Now this is the trick. अब देखो हम कह रहे हैं, अब मान लो ये नॉन एम्प्टी है तो हमें दिखाना है S is countable. S का मतलब क्या है? S is this set. S, we have got a non-empty set of all EI. मज बात खड़ा बस So मुश्किल मज बात बस्ती मज ना मुश्किल है किधर होगा हेलो, क्या चल रहा है? क्या जमाने बात तुमने सुल बात मैं कल चला किधर नेवर है मार हमने दिमाग एग्जाम में देन पर ये कौन है? रोल नंबर 12. हिलाल रोल नंबर 12 कौन है? हिलाल हिलाल हिलाल. तो हिलाल क्या कर रहा था? चलो हम वापस जाते हैं उस बोर्ड पे. तो हमारा सेट S है कि all EI such that for a certain x, XEI जो है वो नॉन जीरो है. तो मैं ये कह रहा हूँ सपोज दिस इज नॉन एम्प्टी, तो अगर इसमें कोई एलिमेंट है तो उसका मतलब क्या है, ये नॉन जीरो होगा. दिस, अगर ये नॉन जीरो है इट मीन्स दिस मस्ट बी पॉजिटिव, है ना? शुडंट दिस बी पॉजिटिव? क्योंकि ये जो मॉडुलस होता है वो या तो जीरो होता है या मतलब या अब जीरो तो हो नहीं सकता क्योंकि मैं कह रहा हूँ XEI इज नॉन जीरो. तो अगर कोई यहाँ एग्जिस्ट करता है देन आई शुड बी एबल टू फाइंड दैट XEI जो है वो ग्रेटर देन जीरो है. अब अगर पॉजिटिव है देन आई कैन सर्टेनली फाइंड अ नेचुरल नंबर सच दैट दिस इज ग्रेटर देन नॉर्म ऑफ x स्क्वायर बाय n. क्योंकि आई कैन ऑलवेज मेक इट, जितना भी है हम n को एडजस्ट करके इसको छोटा करके इसको, मतलब सपोज दिस इज 1 तो मैं n को ले सकता हूँ नॉर्म ऑफ x स्क्वायर into 2, तो ये आ जाएगा 1/2, है ना? तो 1/2 से तो बड़ा ही है. इसी तरह से 1/3, 1/4 मैं जैसे एडजस्ट करूँ वैसे मैं कर सकता हूँ. मतलब मैं n को ऐसे ले सकता हूँ इतना छोटा नंबर कि वो नॉर्म x स्क्वायर को एडजस्ट करे फॉर अ फिक्स्ड x. एनीवे, सो देन दिस सेट जो है this by Bessel's inequality जो हमने किया था फॉर फाइनाइट केस. नाउ मैं यूं लिख लो, we know that
we know that summation xei I runs from 1 to n square, लेकिन यहाँ एग्जाम में तुम ये यहाँ प्रूव करोगे, हमने किया था, ये हम कर चुके हैं. Therefore, if S contains n elements, या यूं लिख लो n or more than n elements, तो क्या होगा, तो ये वायलेट होगा. यानी मैं इनको ऐड करूंगा इन एलिमेंट्स को जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करते हैं. आई वुड गेट समेशन आई रन्स फ्रॉम 1 to n xei square is less than equal to n times, sorry, is greater than equal to n times norm x square divided by n. That is, I will violate the finite case of Bessel's inequality. Contradicting this, let's call it star, contradicting star. उसका मतलब क्या हुआ, उसका मतलब ये हुआ कि S में n या उससे ज्यादा एलिमेंट्स नहीं हो सकते. Therefore, for a particular n, Sn can have at most n minus 1 elements. क्योंकि अगर n या उससे ज्यादा हो तो for a particular n, यानी S1 can have at most 0 elements, S2 can have at most 2 elements. इसी तरह से है ना, मतलब Sn जो है Sn उसमें n minus 1 एलिमेंट से ज्यादा नहीं हो सकते. And S would be union n runs from 1 to infinity Sn, क्योंकि यहाँ पर कोई भी होगा, जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूँ, वो किसी न किसी n के लिए तो ये सेटिस्फाइड डेफिनेटली करेगा. यानी वो किसी न किसी n में तो होगा ही, Sn में तो है ही जो यहाँ पे है. So मैं सभी Sns को जमा करता हूँ for all natural numbers. So then Sn, and Sn में कितने एलिमेंट्स हैं, Sn में मतलब is a finite set. So countable union of finite sets is countable. So and hence S is countable. तो ये हमारा लेमा हो गया. प्रूफ. तो अब हमें पता चला फॉर एवरी x, अगर मेरे पास कोई ऑर्थोनॉर्मल सेट है, फॉर एवरी x, ये जो x EIs हैं नॉन जीरो, ये वाले EIs जहां पे इसका जो प्रोजेक्शन x का है नॉन जीरो, ये जो EIs हैं ये काउंटेबल से ज्यादा नहीं हो सकता. तो वंस आई एम डन, तो प्रूफ ऑफ द थ्योरम इज इजी. उसके बाद मतलब ज्यादा कुछ थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना है. ओके, नाउ चलो इसका नाम कुछ यहाँ देते हैं, जो हमने ओरिजिनल इक्वेशन जो हमें प्रूव करनी है ये, लेट्स कॉल इट इक्वेशन 1. ओके, तो क्या करेंगे, इफ S इज एम्प्टी, अगर एम्प्टी है तो ऑब्वियसली ये जो इसमें ये जो सम है ना, इसमें सारे के सारे टर्म जीरो, क्योंकि ये जो S है जहां पर ये प्रोजेक्शन जो ये एलिमेंट्स है ये नॉन जीरो है, तो वो एम्प्टी है, यानी ये सारे के सारे जीरो है, कि कहीं पर भी ये नॉन जीरो नहीं है. तो लेफ्ट हैंड साइड तो जीरो हो जाएगा. तो मैंने क्या कर दिया, तो लेफ्ट हैंड साइड तो जीरो हो जाएगा. इफ S is empty, we define LHS, या the sum on LHS of 1 to be 0, and hence 1 is true. फिर तो ट्रू है ही, क्यों, क्योंकि 0 is less than equal to norm of x square, तो obviously लेफ्ट हैंड साइड 0 हो गया.
It's obviously true. Now अब दूसरा है, in case S is non-empty, S is either finite or countably infinite. Countably infinite by lemma. So in case if S is finite, we write S equal to E1, E2 up to En. In only finitely many non-zero terms, huh? For some n belonging to set of natural numbers, and define our sum to be summation I runs from 1 to n, inner product xci, sum of the squares of the projections, which is clearly independent because it's a finite sum of the order in which the elements of S are ordered. यहाँ मैंने एक ऑर्डर दिया ना 1 से n तक, लेकिन जो कि फाइनाइट है, फाइनाइट सम में मैटर नहीं करता हमने पहला कौन लिया बाद में किसको ऐड किया, इन्फिनिट में मैटर करता है. सो और यहाँ तुम प्रूव करोगे वो केस 1, तो या जो हमने प्रूव किया, देन प्रूव दैट, यहाँ तुम करोगे खुद ही वो प्रूव, क्योंकि मैं वो कर चुका हूँ इससे पहले वाले लेक्चर में. तुम्हें प्रूव करना है समेशन आई रन्स फ्रॉम 1 to n mod xci the square is less than equal to norm of x square. और चूंकि मैं तो फाइनाइट केस तो हो गया, तो यहाँ करोगे तुम खुद. So if S is countably infinite, let the vectors of S be arranged in a definite order हम इसको एक ऑर्डर देंगे. फिर ऐसा कर सकते हैं हम, क्योंकि ये काउंटेबल है, तो we can give it an order, we can put it into a one-to-one correspondence with a set of natural numbers. Now by the theory, ये तो मैं अभी explain करूँगा, theory of absolutely convergent series पहले मैं ये करूँगा, तो पहले मुझे लिखना है if this sum converges, if summation I runs from 1 to infinity, summation exei square converges, then every series obtained by rearranging its terms is also convergent. तो मेरे कहने का मतलब है, अगर तुम्हारे पास कोई सीरीज कन्वर्ज करे, जैसे तुम्हें पता है अगर मैं ये सीरीज कन्वर्ज करती है ना, ये सीरीज जो है ये ऑल्टरनेटिव सीरीज है, लेबनीज टेस्ट से ये कन्वर्ज करेगी. लेकिन अगर मैं इसको रीअरेंज करूं, ये जरूरी नहीं है कन्वर्ज करे. सपोज अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, फिर लिखूं -1/2 + 1/4
minus 1 by plus 1 by 6. So this does not converge. This would be actually indeterminate, meaningless. लेकिन ये कन्वर्ज करती है, यानी अगर हम सीरीज किसी कन्वर्जेंट सीरीज को रीअरेंज करें टर्म्स को, तो इसका मतलब नहीं अगर वो कन्वर्ज करता है तो रीअरेंज्ड टर्म भी कन्वर्ज करेगी। लेकिन अगर सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, इफ द सीरीज इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, जैसे फॉर एग्जांपल समेशन 1 by n square, n runs from 1 to infinity. Now this is absolutely convergent. तो अब इसको किसी भी तरह से रीअरेंज करो, जैसे है ना, इट्स एक्चुअली 1 square plus 1 by 2 square plus 1 by 3 square plus so on and so forth, this converges. लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 1 square plus 1 by 2 square, फिर लिखूं plus 1 by, चलो ऐसे 1 by 2 square plus 1 by 4 square plus 1 by 6 square plus so on and so forth, फिर इसको लिखूं मैं plus 1 by 2 square plus 1 by 3 square, मतलब किसी भी तरह से रीअरेंज करूं, इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, वही हम उसी नंबर को ये कन्वर्ज करेगी जैसे पहले करती थी। लेकिन अगर वो, जैसे ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं है, दिस इज कन्वर्जेंट but this is not absolutely convergent. So therefore, if I rearrange the terms of this series, the Leibniz series, it need not converge. It won't converge actually. So लेकिन हमारा जो ये सीरीज है, this is a series of non-negative terms. और non-negative terms में क्या होता है, कन्वर्जेंस और एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस में कोई फर्क नहीं होता। सो अगर ये, चूंकि मैंने इसको एक पर्टिकुलर ऑर्डर दिया है, ये जो मेरे पास एक सेट था ना, मेरे पास था E1, E2, so on and so forth, जो भी है काउंटेबल अनकाउंटेबल, अब मैंने इसमें से वो वाली टर्म्स लिए जिनके लिए x EI नॉन जीरो है, सिर्फ मैंने उस सबसेट को लिया, और वो सबसेट अगर काउंटेबल है तो ऑब्वियसली मैं चूज कर रहा हूँ, पहले मैं इसका नाम दे रहा हूँ दूसरा, लेकिन कोई कहेगा नहीं मैं ऐसे इसको सम नहीं करूंगा, मैं पहले इसको लूंगा फिर इसको लूंगा, क्योंकि मतलब सम का मतलब है सम, इसका मतलब थोड़ी ना कोई पर्टिकुलर ऑर्डर है, जब मैं इसको विदाउट ऐसे लिख रहा हूँ XEI, राइट, इसमें ये तो सम, जस्ट सम देम ऑल, ये इसका मीनिंग है। तो अगर ये काउंटेबल है, तो जब मैंने इसको पर्टिकुलर ऑर्डर दिया, अगर मैंने दिखा दिया एक के लिए कन्वर्ज करता है या एक के लिए ये ट्रू है, दिस इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर, तो देन द अदर वन शुड आल्सो फॉलो। एनीवे, ओके, इनफैक्ट द कन्वर्जेंस जो होगी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज की, रीअरेंजमेंट से सम पे कोई फर्क नहीं पड़ता, एंड ऑल सच सीरीज वो लिख भी देते हैं, have the same sum. So we can define, so हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर हम डिफाइन करें समेशन मॉडुलस ऑफ एक्स ई आई या स्क्वायर को हम लिखें ये पर्टिकुलर सम टू बी समेशन एक्स ई आई स्क्वायर आई रन्स फ्रॉम 1 to infinity। ये जो हमने इसको एक ऑर्डर दिया, क्योंकि अगर हमने इसके लिए दिखा दिया इक्वालिटी को, so it should be for any possible rearrangement. So it is sufficient to show, so it suffices to show that summation I runs from 1 to infinity modulus x ei square is less than equal to norm x square. Okay, but we know that summation I runs from 1 to n x ei square is less than equal to norm of x square for all n belonging to the set of natural numbers. अब चूंकि राइट हैंड साइड जो है यहाँ पे it doesn't depend upon n, so letting n approach infinity, तो n को मैं कितना भी बढ़ा लूँ राइट हैंड साइड पे कोई नहीं फर्क पड़ने वाला, so we get जो हमें चाहिए summation I runs from 1 to infinity xci का square is less than equal to norm x square together. अब इसके नेक्स्ट जो हमें करना है वो इसी का दूसरा हिस्सा है, यानी थ्योरम ये है
if EI is an orthonormal set in a Hilbert space, is an orthonormal set in a Hilbert space H, and if X belongs to H, is an arbitrary element, arbitrary vector in H, then X minus summation X EI, अब भी एक arbitrary sum की तरह हम लेते हैं. This is orthogonal to EJ for all J. Again यहाँ पे हमने finite के लिए प्रूव किया है ना. और प्रूफ में हम फिर से अगर एग्जाम में आ जाए तो हम पहले लिखोगे वो लेमा है ना. लेमा का मतलब the set S equal to EI such that XEI is non-zero is either empty or countable. ठीक है. Okay. Now if S is empty, तो इसके बाद तुम करोगे if S is empty, we define summation XEI क्योंकि ये सारे zeros हैं, EI to be the zero vector and observe that X minus summation XEI EI is equal to X minus 0 is equal to X is orthogonal to each EJ. To each EJ because जब मैं कह रहा हूँ ये S empty है यानी हर इसका मतलब क्या होगा, because इसकी मतलब ही है S empty होने का मतलब यही है कि XEJ is equal to 0 for all J. Look, that's what we mean by S is empty. इसका मतलब ही यही है. So empty वाला केस तो सीधा ही है. Now suppose S is non-empty and finite. Now suppose S is non-empty. Then S is either finite or countably infinite by lemma infinite. Now if S is finite, then we can write it, then we can write S as E1, E2, En, and we define summation X EI EI to be summation I runs from 1 to N X EI EI. इसके बाद तुम प्रूव करोगे जो हमने पहले ही प्रूव किया है, and we show that, ये एग्जाम में नहीं लिखना, we show that, तुम दिखाओगे यहाँ पे that summation I runs from 1 to N X EI EI is orthogonal to EJ for all J. ये हम कर चुके हैं, इसमें सिंपली डॉट प्रोडक्ट को वैलिडेट करना है. तो ये तुम करोगे क्योंकि फाइनाइट केस हम कर ही चुके हैं, तो ये उसमें वी डन इट. तो कट एंड पेस्ट करना है वहां से यहाँ इसको. नो अब वो मेन केस अब हमारा अब है. सो वी मे नाउ assume that
S is countably infinite. Let the vectors of S be listed in a definite order. In a definite order, यानी जहां पे वो प्रोजेक्शन x की नॉन जीरो है, उन EIs को हम एक डेफिनेट ऑर्डर में लिखेंगे. से S is equal to E1, E2, so on and so forth. इस तरह से जाएगा हमारा. And we put Sn to be summation I runs from 1 to n. इसका partial sum बनाएंगे इन vectors का. So it's a well-defined vector, as you can see. Scalar into vector plus scalar into vector plus scalar into finitely meaning, so well-defined. And we know that for m greater than n, I should write Sm, S sub m minus S sub n square is equal to summation, of course, I runs from n plus 1 to m. मतलब n vectors में से हमने m बाहर निकाले तो बचेंगे इतने m minus n x ei स्क्वायर. हमें यहाँ पे क्योंकि इसको अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो लंबा चौड़ा होगा, तो मैं चाहूंगा अगर मैं दो वेक्टर्स हूँ, मतलब मैं थोड़ा सा दो वेक्टर्स के लिए इजी होगा इनर प्रोडक्ट को एक्सपेंड करना. तो मेरे कहने का मतलब है सपोज दिस वर जस्ट, ये है एक्चुअली, ये जो है दिस इज लाइक इनर प्रोडक्ट x e1 e नहीं n plus 1 e n plus 1 plus x e n plus 2 n e n plus 2 plus so on and so forth x e m e m का स्क्वायर. अब अगर मैं इनर प्रोडक्ट को एक्सपैंड करूंगा फिर ये थोड़ा लंबा चौड़ा हो जाएगा ऐसे ही. तो लेकिन अगर मैं दो लूं, मतलब दो के लिए तुम्हारा क्लियर हो जाए, यानी मैं दो को लूंगा, मैं लूंगा, यानी मैं सम को बाहर निकाल सकता हूँ, बस इतना ही. यानी वो कैसे, देखो अगर मैं लेता दो, एन के लिए भी यही होगा. सपोज वन के बजाय, जस्ट टू मेक सिचुएशन लुक अ लिटिल बेटर, अगर ये होते दो, यानी से एक्स ई एन प्लस 1 ई एन प्लस 1 प्लस एक्स ई एन प्लस 2 ई एन प्लस 2. दो के लिए मैं दिखाऊंगा, लेकिन एन के लिए भी यही आर्गुमेंट फॉलो करेगा, क्योंकि अगर मैं 10 के लिए करूंगा तो ये इंक्रीमेंट भी बहुत बड़ा हो जाएगा. नॉर्म के स्क्वायर का मतलब खुद के साथ इनर प्रोडक्ट, यानी ये बन जाएगा x, देखो कितना लंबा चौड़ा हो जाता है. अगर मैं n के लिए करूं तो कितनी दिक्कत हो जाएगी. फिर मुझे लेना है प्लस x ई एन प्लस 2 ई एन प्लस 2 कॉमा, फिर यही वेक्टर x ई एन प्लस 1 ई एन प्लस 1 प्लस x ई एन प्लस 2 ई एन प्लस 2 और इनर प्रोडक्ट क्लोज. अब यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द इनर प्रोडक्ट, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, ब्रेक करेंगे इसको, ये बन जाएगा आई थिंक x ई एन प्लस 1 ई एन प्लस 1 कॉमा x ई एन प्लस 1 कॉमा ई एन प्लस 1 प्लस ये चार बनेंगे ना प्रोडक्ट्स. देन आई वुड हैव x ई एन प्लस 1 ई एन प्लस 1 कॉमा x ई एन प्लस 2 ई एन प्लस 2 प्लस x, ठीक है ये आ गया 2 आ गया. अब यहाँ पे ओके, हाँ ई एन प्लस 2 भी आएगा, ई एन प्लस 2 कॉमा ई एन प्लस 2
x e n plus 1 e n plus 1, ये तीसरा आ गया। चौथा आएगा x e n plus 2 comma e n plus 2 x e n plus 2 comma e n plus 2, इस तरह से देखो। ओके, तो अगर मैं इसको फर्दर एक्सपेंड करूं तो तुम देख सकते हो, देखो ये स्केलर है, ये बाहर आएगा, ये स्केलर है, ये बाहर आएगा तो कॉन्जुगेट में बाहर आएगा, यानी ये होना चाहिए, पहला वाली टर्म होनी चाहिए हमारी x e n plus 1 का बार into x e n plus 1 का बार, ठीक है। then I have e n plus 1 e n plus 1, but इसी तरह से दूसरी टर्म आएगी, you would get x e n plus 1 यहाँ पे multiplied by x e n plus 2 का बार, क्योंकि दूसरी टर्म से आएगी, यहाँ बचेगा e n plus 1 e n plus 2। इसी तरह से तीसरी टर्म आएगी, ये प्लस है x e n plus 2 कॉमा x e n plus 2 का बार मल्टीप्लाइड बाय e n plus 2, मैंने 2 लिखा नहीं, यहाँ होना चाहिए 1 और e n plus 2 e n plus 1। इसी तरह से चौथी टर्म आएगी x e n plus 2 into x e n plus 2 बार into e n plus 2 e n plus 2। अब देखो ये हो जाएगा 0, क्योंकि ये ऑर्थोनॉर्मल सेट है, ये एक दूसरे के साथ इनका इनर प्रोडक्ट 0 है और खुद के साथ इनका इनर प्रोडक्ट 1 है, यानी ये 1 है, ये 0 है, ये 0 है और ये 1 है। और इसका जब इसके साथ कॉन्जुगेट करेंगे, तो कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मॉडुलस का स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये सिंपली होना चाहिए x e n plus 1 का स्क्वायर प्लस x e n plus 2 का स्क्वायर। 2 का मैंने देखा ये होगा, तो सबके साथ यही होगा, यानी दिस शुड बी जस्ट इक्वल टू समेशन I runs from m plus 1 to m